to the flag hoisting ceremony at the Quaid-e-Azam House Museum. Today is a very special day, as you know, 23rd of March, Pakistan Day, which we are celebrating. And I would like to welcome our chief guest, Admiral Ida Rieu School, who is present here with us today. May I now request that the National Anthem is played and the flag is hoisted. May I now request the Ida Rieu School children to sing a patriotic song. May I now ask the children of the students of Jinnah Foundation School to sing a patriotic song. Thank you. गगन के तारे हो, एक गगन के तारे एक समंदर में गिरते हैं, सब दरियाओं के धारे, सब दरियाओं के धारे जुदा जुदा है, एक है हम एक हैं. May I now invite the students of Hamdard School to sing patriotic songs. Thank you. Assalamu alaikum and good morning to all of you. On behalf of the Quaid-e-Azam House, I wish to extend a very warm welcome to all the students who are here
all the guests who are here, and the members of the Board of Management sitting here on the left and right, and the members of the Managing Committee and the media for being with us here today. We're indeed grateful to all of you. But let me say this, hearing these young children render these beautiful songs after the National Anthem and 6 patriotic songs, I sincerely hope that the vibrancy of your song and its words and the music will resonate throughout this country, and will instill a sense of patriotism and devotion and dedication in all citizens of Pakistan. You young students are the leaders of tomorrow. Please remember that. You have done very well today, but I expect that you will continue doing well in your studies as well and become leaders of Pakistan in future. Before I say anything else on the Pakistan resolution, I want you to know that we have celebrated Women's International Day this month. And in recognition of that, we have chosen a guest of honor here, Mrs. Nadira Panjwani, who will speak to you, and she will launch the book that has been written by a lady author, Mrs. Amina Aswar. She's also here, and the Quaid-e-Azam House Management Board is hosting this function to launch this book in service of the country and in service of the students, to spread Jinnah's message, starting with the younger generation. This book which we are giving you today is for children between the age of 6 and 12. We want you to know, the children to know, the reason behind the creation of Pakistan. We want you to know what Jinnah expected Pakistan and its citizens to achieve. And whether we have achieved them or not is a different matter. But you must know what he expected from us. The next thing which is very important today, to my mind and to all of you, is that Jinnah always advocated the role of women side by side with men. He said, take your women along with you in every sphere of life, in every sphere of activity. So please remember that you have to show the highest respect for your mother, your sisters, for your female teachers. Not that you respect your male teachers as well, but female teachers, your mothers, your sisters, and the women that you meet. You have to work with women side by side. This is my advice to all men of today in Pakistan and to all the younger generation of male students. Your future lies in women working with you side by side, and remember, side by side as equal partners in your life. Dearest students, Assalamu Alaikum. I am grateful to Liaquat Merchant Saab for inviting me to say a few words on this happy occasion. 23rd March 1940 is a defining moment in the history of our homeland. An idea that was presented by Allama Iqbal 10 years earlier at the historic Allahabad Convention of the All India Muslim League, outlining the vision of an independent state for Muslims of the subcontinent, was given a resounding endorsement and expression in the form of the Pakistan resolution passed on this day in Lahore. This resolution formed the foundation of the Pakistan movement, and 7 years later, the dream of an independent country for the Muslims of the subcontinent was realized in the form of our beautiful homeland of Pakistan. Many of us were probably not around when Pakistan came into being, and we have no personal recollection of all the struggle, sacrifice, and hardship experienced by our elders at that time. And this is perhaps the reason why we take the priceless blessings of freedom, identity, peace, country, and belonging for granted. It is true that we have sadly failed in attaining the vision of our founding leaders. We have missed most of our development goals, experienced the dismemberment of our country, and many miseries, mainly of our own making. But still, I firmly believe that Pakistan holds the potential and the promise of a rising phoenix. As a precious gift to mark this day, the Jinnah Society is launching a children's book on the life and achievements of our Quaid.
narrating what was basically a very momentous and eventful life in a version that is understandable and appealing to young minds is not an easy task. Yet, the author of our guide, Ms. Amina Asfar, has done the job with great flair and lucidity. May I now request the author, Ms. Amina Asfar, to present a copy of our guide to our chief guest, Admiral Khalid Mir. Thank you very much, Amna, on behalf of all of us sitting here. I think she's done a tremendous job in putting these ideas into paper in a style that can be seen, read, and understood by not only the ages of 6 to 12, but also the people who are much older than that. And I wish you all happy reading of this book, and I'm sure it will be circulated to all the schools in Pakistan, inshallah, eventually. Thank you very much, Amna. इस किताब के बारे में मुझसे कहा गया कि चंद बातें मैं बताऊं, लेकिन मुझे इस किताब के सिलसिले में एक वाक़या याद आता है जो कि बहुत साल पहले हुआ था। मैं एक छोटे से बच्चे को जानती थी, हमारी दोस्ती थी। उसकी वालिदा ने मुझे खाने को बुलाया, मैं गई। तो वो दिन था यही 23 मार्च का। बहरहाल वो बच्चा 5-6 बरस का था। वो अपने स्कूल से आया था और जहाँ पे खूब उसने कौमी नगमे गाए थे और सुने थे और बहुत सब खुशी उसने सब कुछ किया था। वहाँ वापस आया। अच्छा, ये बच्चा बड़ा कमगो था, कम बातें करता था, मगर जो भी बात करता था उससे पहले सोचता बहुत था। उसको सोचने की आदत थी। उसकी दूसरी आदत थी कि उसमें बहुत तजस्सुस था, यानी हर चीज़ के बारे में वो सवालात किया करता था। तो उसने वहाँ मुझे बैठे हुए देखा तो कहने लगा, आंटी ये मुझे बताइए कि पाकिस्तान को जिन्ना साहब ने बनाया, क्वाइद-ए-आज़म ने बनाया? मैंने कहा हाँ। तो फिर अब वो फिर सोच में पड़ गया। फिर कहता है कि लेकिन देखिए उन्होंने बनाया, लेकिन पाकिस्तान तो बहुत बड़ा है। मैंने सोचा कि मैं समझ गई उसकी लाइन ऑफ थॉट, लेकिन मैंने कहा हाँ ये भी है, लेकिन मेरे खुद समझ में नहीं आया कि मैं अब क्या इसको किस तरह से समझाऊँ। तो मैं भी सोच में पड़ गई, वो भी सोच में पड़ गया। फिर थोड़ी देर बाद कहता है कि ये तो इंग्लैंड से भी बड़ा है। मैंने कहा हाँ ये तो बात सही है, इंग्लैंड से बड़ा है। और उसके बाद फिर मैं ज़रा काफ़ी एम्बैरेस हो गई थी, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे बताऊँ। चलिए, लेकिन उस वक्त से मेरे दिमाग में ये बात आई कि बहुत सारे बच्चे वो बातें नहीं समझते जो वो पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं। और आजकल के पाकिस्तान में बदकिस्मती से बहुत ज़ोर है रटवाने पर, तो वो रट लेते हैं अपनी। अब उस रटने में और उस तरह के मुश्किल चीज़ें पढ़ने में वो उनको फिर दिलचस्पी नहीं रहती। और दिलचस्पी बहुत ही ज़रूरी है। तो दिलचस्पी तब होगी जब उनकी बात समझ में आएगी और वो ऐसे अंदाज से कही जाएगी कि उनको शौक़ हो और पढ़ने का। तो ये मेरे दिमाग में बहुत रहा। तो उसके बाद फिर जब मैं किताबें बच्चों की लिखने लगी तो मैं हर वक्त ये बात ध्यान में रखती थी कि देखो बच्चों की दिलचस्पी को यानी पकड़ना, उसको दिलचस्पी इनकी कायम रखना बहुत ज़रूरी है और सब चीज़ों से। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस तरह आमना बीबी ने कहा कि कायद की बहुत सी बातें हैं जो बच्चों को नहीं पता, और जब हमारे बच्चों को नहीं पता तो फिर वो आखिर जनरेशन को किस तरह पता होगा। तो मैं समझता हूँ, मैं आपको बड़ा दाद देता हूँ कि आपने ये बड़ा मेहनत का काम किया है, और मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि आप आगे भी जो है ये करें कि और भी ऐसी प्रोड्यूस करें किताबें। ये जो हम कोशिश कर रहे हैं, ये लियाकत मर्चेंट साहब मेंबर ये गवर्नर्स के सीफार के और जिन्ना सोसाइटी के और जो डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ नेशन बिल्डिंग के, हम क्या कोशिश कर रहे हैं? हम कोशिश इस वक्त क्या कर रहे हैं, हम कि क्वाइद-ए-आज़म के बारे लोगों को अवेयरनेस आए।
اور اس اویئرنیس کے ساتھ جو صحیح باتیں ہیں وہ آئیں. یہی نہیں کہ خالی ہم قائد-اعظم صاحب کے مزار پر جا کے فوٹو پر چھوٹی کریں, 2-3 اخباریں ہماری فوٹو پروڈیوس کر دیں اخباروں میں اور واپس چلے آئیں, کوئی پتہ نہیں قائد-اعظم پہ کیا ہوا. تو یہ آئی تھنک داد میں دیتا ہوں لیاقت مرچن صاحب کو. اینڈ لیاقت has really worked very hard. And it's I will say this, it is all because of you. And and we have along I think اس سے بعد میں ضرور مینشن کروں گا کمپیوٹر صدیق ملک کہ کمپیوٹر صدیق ملک نے بے حق یہاں پر بولتے ہیں کہ ایفرٹ کر کے یہاں پہ یہ سب چیزیں جو کر رہے ہیں, جتنی بھی آرگنائزیشن ہے یہاں پر لوکل, وہ کمپیوٹر صدیق ملک کی وجہ سے. تو میں آپ لوگ کو انکریج کرتا ہوں اور انفیکٹ کہ آپ لوگ زیادہ آئیں. اس ڈکلیمیشن کانٹیسٹ جو ہوا تھا اس کے اندر کافی اسکول آئے تھے, بٹ بہت سے اسکول نہیں بھی آئے, اور میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے اس چھوٹے فنکشن کی وجہ سے اور بھی آئیں گے. ہم یہاں بہت چیزیں کوشش کر رہے ہیں, ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے جو جگہ ہے وہاں پر ایک انڈر گراؤنڈ آڈیٹوریم اور پارک بنائے, وہاں پر ایک آڈیو ویژول سینٹر بنائے قائد کے لیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اگر یہ ہمارے نصیب میں ہے کہ ہم یہ مشن اکمپلش کر رہے ہیں تو یہ بھی کر کے رہیں گے. لیکن سب سے بڑی بات میں آج بچوں کو داد دیتا ہوں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں تو اپنے کو سمجھتا تھا کہ میں 65 کی جنگ میں واپس پہنچ گیا ہوں اور 71 کی جنگ میں واپس آ گیا جو میں نے پیٹریوٹک سانگ سنے, اور بہت بہت شکریہ.